Assalamualaikum everyone. Today we have with us Mustafa Hyder. He is the executive director of the Pakistan China Institute. They're doing phenomenal work trying to bridge the gap between Pakistan and China, the friendly neighbors that we are. And he's been doing a whole bunch of work on climate change, on the Belt Road Initiative, amongst other things. He's been Pakistan's representative on a bunch of conferences and workshops, and he's really tried to focus on the national security angle of all of this as well. So, without going further into this, I'd like to welcome you, Mustafa, and I'd request that we start off with a little introduction of yourself by you and what the Pakistan China Institute is kind of focusing on at the moment. Firstly, thank you, Makash, for taking out the time and giving me the opportunity to be on this podcast. I was looking forward to this. And my introduction is this, that I have, as you said, been working on China for a long time. And from a time when it was not fashionable to work, and at a time when it wasn't the second biggest economy in the world, and at a time when the Belt and Road Initiative was not there. Oh wow! And time when, and I'm not that old, opportunity dinosaur from some other generation, but I work here at the Pakistan China Institute, which, Mikhail, as you know, is the apex sort of a platform to connect with China economically. And we've been doing a lot of work consistently for the past many years. And I think my work has become more and more important because our interdependence with China, which is mutual, particularly in recent times, more economically, has become so closer. So it's very exciting and to be working on China and with China. And I consider Pakistan actually very lucky. And I want to say this because these days there's a lot of despair around us whenever you have a conversation with someone. But if you travel and if you go to the Middle East, or you go to Africa, or you go to Europe, the common thread there is doing commerce, trade, getting into the Chinese market. That's all economies are basically angling for. And you saw that the German chancellor, leading country of the EU, despite US pressure, etc., is engaging very forthrightly, very proactively with China, because it's you remember the news we cover, it's the economy, stupid. So I think that Pakistan is very well placed that way, and it's really an honor to work at the Pakistan China Institute and work with our stakeholders here and with China, and also to develop a sort of a coalition of young, dynamic people who want to also engage with China, people like yourself and others. And I feel like that's one of the new initiatives that I would like to take to develop. And I really like, Mikhail, you to help me, particularly with the Lahore area, to develop that constituency of people who understand how we can better leverage our advantages with China. So I think my first kind of question will be to you is that आप लोग BRI पे काम कर रहे हो, for viewers, that's the Belt and Road Initiative that the Chinese are taking across the globe at this point in time, and the CPEC, which we keep talking about, is a subset of that initiative, and you really focused on that. So given how things have been over the last 5 years, how CPEC seems to have stalled in a lot of opinions, how do you see all of this going forward? Because आपने कहा है कि आपका आउटलुक पाकिस्तान के फ्यूचर पे इतना ग्रिम नहीं है जितना बाकियों का है, और अब मुझे लगता है कि सीपैक एक बहुत सेंट्रल मेंटल पीस है. तो क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपके नजरिए से, क्योंकि आप चाइनीज के साथ जिस लेवल पे एंगेज कर रहे हो और कम लोग कर रहे होंगे, वो आप क्यों ये पॉजिटिविटी देखते हो? देखिए जी, आई थिंक यू रियली हिट द नेल ऑन द हेड कि मैं क्यों इतना ज्यादा लाइट एट द एंड ऑफ द टनल देखता हूँ जबकि बहुत से लोग इसका बरक्स देखते हैं. तो सबसे पहली बात यह है कि लेट्स स्टॉप विद डेटा. जितने डेवलपिंग ममालिक हैं, जिन्हें पहले आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते थे, व्हिच नॉट पोलिटिकली करेक्ट एनीमोर, और जिनकी बिग पॉपुलेशंस थे, ठीक है, और तीसरी ममालिक कंट्रीज थे, उनकी आप डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरीज देख. इंडोनेशिया, Bangladesh, India, China,
China is basically it's past 2 decades, right? Which has been the ये 3-4 जो मुल्क मैंने नाम लिए और भी बहुत से ममालिक हैं, लेकिन ये 3-4 ममालिक हैं, they're doing very well, and mostly big populations are in Asia. These youth bulges, where we have younger populations. Of course, China has an aging population, which is a disadvantage for them, which is why they're encouraging 3 children to have 3 children from one. With a deep problem. So we have the common denominator with all of these countries, and all of these countries have transformed. The growth of Indonesia, as you know, in ASEAN is one of the highest. India, I mean, they've literally and metaphorically reached the moon. China, we all know about China. Bangladesh, is a country. When I was growing up, हमारे जो इर्द-गिर्द लोग होते थे, जो so-called wise people consider किए जाते थे, they used to talk so condescendingly about Bangladesh. Remember that. And now, I mean, everything is made in Bangladesh. Every single thing that you wear, whether it's a high street brand or it's a top tier brand, is it's मैं तो उस दिन किसी से मजाक कर रहा था, जब और डीवेल रोज होता रहता है कि हम एक जमाने में मजाक करते थे कि ये तो 2 टके का भी नहीं है, और 2 टका कहाँ है इस वक्त, और PKR कहाँ है इस वक्त? 2 टका कहाँ है? हाँ, आज ये बड़ा अच्छा सवाल है. तो मैं समझता हूँ कि I'm not talking from a ideological perspective कि जी मैं कोई सियासी स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ. मैं सिर्फ डेटा के से बात कर रहा हूँ कि we are set up. We've been very lucky throughout our history, not from anything of our own doing, but our data suggests that we are going to take off. Unless we pull off some miracles that we do every now and then to stop that, And I want to share a little snippet, and I'm just going to leave you with that. A few days ago, the global managing director of McKinsey was in Pakistan. The global MD. Oh, okay. McKinsey. Was in our country. Okay. And it was private gathering somewhere, and all that he had to say about, firstly, the fact that he was in Pakistan. Secondly, what he had to say about Pakistan was so optimistic. From a company standpoint, they see a lot of growth in this country. And there are numerous other examples. So I think our perceptions should not be based कि जी आज डॉलर कितना वो गिर गया है, 450 हो गया या 360 हो गया. It's definitely, I think, a very, very difficult period for us. But I feel that this is where it's at in Pakistan. And आप सिर्फ ये देख लें कि आपके IT exports में हम अगर यहाँ देख लें opportunity कि IT exports India के क्या हैं और आपके क्या हैं. India and Pakistan have the same level of engineers. Like our engineers are fantastic, IT engineers, etc. And हमारे जो tech people हैं, we are fantastic people. But we need to capitalize, and we need to streamline the processes. And I think we need to deregulate. People, like it's like overly regulated, our system, and it keeps on changing. So this is why I see that there's a lot to be, lot to happen here, and I feel like this is where it's at. So I hope you can spread this message far and wide, because we're having some serious trouble talking to international investors, because वो कहते हैं PRI इतना high है कि हम क्या करें आपके साथ, आप खुद ही बता दें. Ajay, so I'll kind of want to delve deeper into your specific work with the China Institute. I think मैं थोड़ा सा, for people who aren't as aware of China Institute, what are like the 2 or 3 very core goals or ambitions that you're looking at in the few years to come? Mikhail, this was set up by the founder and chairman, Senator Mustafa Hyder Sayed, who's actually the only leader in the country, the only politician who's received the award from President Xi Jinping himself. I think he's also the only person who's spoken at BRICS recently, no? Only person who's spoken at BRICS, absolutely. Yeah. Absolutely. I can see that you're
going through and sifting through all newspapers. So That's our job. yeah. So when this was set up, his vision was that this relationship is fantastic from a state to state level. ठीक है जी. Governments और state के दरमियान बहुत अच्छा ताल्लुक है. Lekin, as we know in the 21st century, relations between states are not the end all and be all. It's actually the relationships between chambers, between companies, between people to people, which actually are the real bond. जो फॉर एग्जाम्पल फुल ब्राइट स्कॉलरशिप जो मिलती है पाकिस्तान में लोगों को, जिससे वो जाके आते हैं, वो जो बॉन्ड बनता है, दैट्स मच स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर बॉन्ड यूनाइटेड स्टेट्स के. तो दैट वाज व्हाई पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट वाज सेट अप. एंड व्हाट आवर गोल्स नाउ आर इज आप अगर देखें, हम बहुत अहम पाकिस्तान में, वी टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट initiatives and issues in Pakistan. We talk about export-led growth. We talk about CPEC. But if you actually scratch the surface, how much serious scientific research, like empirical evidence ke saath, something which can be quoted in an international journal, aapko milegi? Yeah. It's a dearth. Hai, but there's a dearth. हमारे जो important issues हैं, they are not backed up by serious, rigorous, thorough research, which, as you know, is the backbone of anything. On CPEC, I'm very proud to report to you and all our people who will be listening to this that we have produced very serious original research. हमने 2015 में करा था कि CPEC का बलूचिस्तान पे क्या इशू इम्पैक्ट होगा. हमने 5 साल पहले women and CPEC बनाया था, कोरिलेशन क्या हो सकता है, how can women's participation in CPEC be there and how. And then we talk, so we've produced a lot of research, and by the grace of God, our research has been published in the Lee Kuan Yew School of Public Policy in Singapore. We are doing research with the RAND Corporation of the United States and whatnot. So एक तो ये है, दूसरा है advising our policymakers to make sure we don't miss the boat that is China. Yeah. Because we are phenomenal at missing the boat. So we definitely get a first prize for that. So to make sure that we engage, understand, and articulate our concerns and interests and converge them with those of the Chinese. Well, that is something very close to my heart, colleagues here. So I think that is some things that we are doing, and I want to share with you, since you on the outset में कहा आपने कहा और बड़ा rightly आपने कहा Belt and Road की बात किया. I must be one of very few Pakistanis who's been at the first 2 Belt and Road forums, and I am going to be in the 3rd Belt and Road forum, which is the Apex summit hosted by Xi Jinping in Beijing, jahan IMF managing director, World Bank heads, and about 60 or 50 head of states who are signatories to the Belt and Road will be there. So this is an opportunity to actually showcase for the next 10 years of the Belt and Road what Pakistan can do and how we can participate. Because one thing is very important, we should not have a sense of entitlement. Pakistan में हम कहते हैं Chinese हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो तो आ ही जाएंगे ना. It's competitive around. Yeah. I always tell people there are other destinations out there now. There's Cambodia, there's Vietnam, there's ASEAN, Bangladesh है, India है, So सिर्फ political relationship के ऊपर नहीं होगा कि जी brotherly countries हैं. That doesn't cut it anymore. No. So and I think we've also shown a lot of our brotherly countries why it shouldn't cut it for our specific example, because we just don't hold to our word. And I think वो जो international credibility हमारी खत्म हो गई है ना, I think that's the biggest dent that people like you have to actually go internationally and fight on. Because ये तो एक तो हमने इतना revolving door in politics बना दिया, वो हम internally अपने short term gains के लिए तो देख लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि बाहर से कोई आने वाला बंदा
जिससे भी बात कर रहा होगा वो कहेगा यार कल तो तुम होगे नहीं तो मैं क्या करूं आपका. Nikhil, I would really like, and I want to repeat this. I want to, why not take this initiative to get people, relevant people, and particularly younger people under this platform, Pakistan China Institute, where we Absolutely. can get minds together and articulate those interests we have and use the platform Pakistan China Institute to the highest echelons in Beijing. We should not be, हमारा पाकिस्तान में होता है, we are always waiting. Yeah. कि जी गवर्नमेंट क्या करेगी, अभी अभी इज नॉट द राइट टाइम, अभी वो तो केयर टेकर है, अभी व्हाई कांट वी टेक दिस इनिशिएटिव? Yeah. हु इज स्टॉपिंग मी? Yeah. नो वन. मैं समझता हूं कि आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस पॉडकास्ट, ask you to gather at least 7 to 8 bright minds in Lahore, that area, and I'd like to have a dialogue with them in the future, and then get a group all across the country to articulate the interests and opportunities for the second phase of CPEC, Yeah. and engage with the Chinese. I think that would interest a whole lot of people because the exposure is phenomenal and the learning curve on this is phenomenal. And I also think at least मेरी personal interaction with government quarters तो ये है कि उनका mean age ही इतनी ऊपर चली गई है कि उनको actually इस generation की needs का नहीं अंदाजा रहा और वो जिस तरह गवर्नेंस और डिप्लोमेसी कर रहे हैं वो आज की दुनिया में नहीं चलता. हम Exactly. और ये आई थिंक यंग ब्लड बड़ा हेल्प कर सकता है इस चीज में बिकॉज आई थिंक जितना इंटरनेशनल हो चुकी है दुनिया और आई थिंक हमारा ना एक मैं शायद एक इररिलेवेंट थोड़ी सी बात लिंक अप कर रहा हूँ बट आई थिंक दिस इज ऑल्सो आवर प्रॉब्लम विद आवर एक्सपोर्ट्स बिकॉज हमारे सिर्फ 10-12 एक्सपोर्ट हाउसेज हैं वो 4 जनरेशन से चल रहे हैं वो दादा जान बताते हैं करना क्या है. हम अपने आप को पिवट नहीं कर सक रहे दुनिया के लिए क्योंकि नीचे किसी को इजाजत ही नहीं है सोचने की. आपने बिल्कुल ठीक कहा. और उसमें ये होता है कि वी आर मायोपिक. वो घोड़ा होता है ना टांगा, या क्या होता है ना, यहाँ वो लेफ्ट राइट देख ही नहीं सकता है, तो सिर्फ आगे देखना है. वो राइट से ट्रैक्टर भी आ रहा है ना, उसे नजर भी आएगा ट्रैक्टर आ रहा है, वो चलता रहेगा सीधा 100%. और आई थिंक हम एक्चुअली कल्चरली भी ये गलती करते हैं क्योंकि हमने अपने लोगों को इस तरह ट्रेन किया हुआ है कि यार आपने बात सुननी है. वो शायद सोशली एक सेटिंग में सही रिस्पेक्टफुल होता है लेकिन एक वर्क एनवायरनमेंट में ना मुझे लगता है कि वो एक्चुअली काउंटर प्रोडक्टिव और स्ट्रैंगलिंग हो जाता है बिकॉज वो थॉट को रोक रहा है. वो थॉट को रोक रहा है और आउट ऑफ द बॉक्स इनोवेशन को रोक रहा है. बिल्कुल. मैं समझता हूं कि ये इस पे हमें काम करना चाहिए और जो this is diplomacy 2.0 and I think we should utilize this and I think क्योंकि आपको पता है कि first 10 years of CPEC अभी मनाए गए, celebrate किए गए. The Vice Prime Minister of China was here as well. The second 10 years जो है जिसकी बात हो रही है उस पे pivot होना चाहिए, उसमें देखना चाहिए और उसकी strategy बनानी चाहिए. एंड अच्छा आई थिंक मैं थोड़ा सा जरा क्लोज की तरफ तो इस तरह ले के जाना चाहूंगा कि अब 10 years गुजर गए हैं, एक सेंटिमेंट इफी सा था ऑन बोथ साइड्स. हम एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं इंटरनली एंड डजंट रियली गेट एनीवेयर. हाउ डू यू सी द रोड मैप फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years from your vantage point, which is amazing. And the other thing is, how do we very specifically quantifiably try to engage the youth in actually coming up and like helping out in any way that they can? I think number one, the keyword is initiative with an I, and it starts with these conversations. Yeah. We shouldn't be, endlessly waiting. Number one, take the initiative. I would say that हमें से मेरा मराद रेटोरिक नहीं, बट हमें एज इन आप और मुझे हमें ऐसा ग्रुप बनाना जो आर्टिकुलेट करे जो इंटरेस्ट हैं बिजनेस के, जो क्या चाहते हैं चाइना से. और इस प्लेटफॉर्म के तहत मैं चाहता हूँ कि हम इंगेज करें चाइना के साथ, ग्लोबल टॉप लीडर्स के साथ engage करें. क्योंकि पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के साथ वो किया जा सकता, उनके टॉप लीडर्स के साथ, टॉप बिजनेस कम्युनिटी के साथ, यहाँ के जो इनके डेप्टी जनरल मैनेजर्स जो होते हैं ब्रांच के लिए, द टॉप चेयरमैन ऑफ द ग्रुप्स. This is what we want to do. This we are willing to invest this much. Can you invest this much with us? I think this can change the game, and I think we need to move from a G2G mindset to a B2B mindset.
Yeah. क्योंकि हमारा होता है जी, वो आ रहा है जी, क्राउन प्रिंस आ रहा है, बंद कर दो, शहर बंद हो जाता है, बड़ा जी पैसे दे गया जी. We have no mindset. Yeah. We have no business to business mindset. Yeah. Because why do we have to हाथ फैला के क्यों खड़े रहते हैं हम? We have so much to offer. Our country has so much. We are a market of 240 million people unofficially. 40 million का market है. Any country would love to come here, as long as you don't bomb them, which we are very good at as well, Yeah. and kill them. वो लेकिन उसके अलावा जो है, ये तो बहुत बड़ी मार्केट है आपकी, एंड आप उनका मार्केट एक्सेस लें. सो मैं समझता हूँ कि आई थिंक दिस इज व्हाट वी शुड डू. It should be a consequential, action-oriented sort of a strategy, and we should take this forward. अच्छा, so I think आपका इतना एक्सपीरियंस रहा है ऑब्वियसली डेव सेक्टर में. आपने पहले भी मेंशन किया है कैसे यू गाइस काइंड ऑफ premeditated the impact on Balochistan of CPEC and whatnot. So have you guys started looking into the implications of climate change and how that affects development and how the whole China partnership will run with that? Absolutely, Mikhail, and I'm very proud to announce and share with you कि हमने एक pioneer initiative दिया है Pakistan China Institute in collaboration with our colleague Mr. Christoph Nedofer from Fudan University, and we worked in SBI as well in that, and it's called the Greening CPEC Initiative. And उसमें हमने टारगेट ये किया है कि जो, क्योंकि लार्जेस्ट इनबाउंड इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में चाइना से आए, और मेन कंस्ट्रक्शन और जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो चाइना से आए और आ रही है. तो greener and low carbon, since we are seventh most affected country by climate change. उसमें जो low carbon में मतलब that means renewable investments, that means green architecture, that means green construction, that means serious environmental studies and environmental feasibilities. आपको पता है कि पाकिस्तान fortunately जो environmental NOC मिलती है जब भी आपके प्रोजेक्ट करते हैं वो ठप्पा होता है. So that is, we've undertaken that, and in that we've involved Chinese investors, the actual companies. We've involved the Chinese government, and we've involved the government of Pakistan. So we've done a lot of work on that, and in fact, on the 13th of September, we will have another dialogue. I'd be happy to send you an invitation. Oh, that would be, I'd be honored. So वो आपको मिल जाएगा invitation, and doing a lot of things on this because we believe that low carbon initiatives are very critical. Particularly, we have to learn from China's EV industry, because the big emitter in the world हम लोग भूल जाते हैं is transportation. And Pakistan में अपने way of life अभी तक हमने public transport का नहीं समझा, और हमारी गाड़ियां बसें जो चलती हैं और हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, बाइक्स वो जितनी इमिट कर रही हैं, those are huge. So the biggest emission from transport. So, and China is leading the way. Musk has also conceded that China EVs it's leading the industry. So China is our neighbor, low transportation costs, it's our friend. Why are we not getting on this bandwagon? Like आपके में आपको मिल रहा है, why are we not doing it? China, Italy export car EVs, so we need to really get on that. We are, as you know, we have high-end EVs in Pakistan, but apart from that, we don't really have EVs. I think जो हमारी EVs है वो काफी irrelevant सी हैं कि अगर आपको सिर्फ BMW की EV मिलती है 12 करोड़ की और फिर Audi की मिलती है 8 करोड़ की, तो आपने, I mean, you're serving what 100 people, 200 people. That's not really helping anyway. और आई थिंक if anything उसके ऊपर जब हमने टैक्स हटा दिया तो आपने एलीट कैप्चर बस एनहांस कर दिया, बिकॉज वो गाड़ी जो उनको बहुत ज्यादा महंगी पड़नी चाहिए थी, उन्होंने बस कहा ओ चल तो ईवी ले रहा हूँ, मैं ले लेता हूँ. आई थिंक ऑन द मैस मार्केट साइड कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं. हमारे जैसे एक पार्टनर इम्पैक्ट पार्टनर है साजगार, they've built Pakistan's first electric rickshaw, which is becoming an export product. They've been really working hard with the ministries relevant के आए कोई पॉलिसी आए, लेकिन वो हर साल पॉलिसी हिल जाती है. फिर एक कराची में एक कंपनी है नोवा मोबिलिटी, they've come up with electric bikes
एंड जो मेरी अभी अंडरस्टैंडिंग है उनका, अभी होंडा का आई थिंक मोटर बाइक जो मुझे कल परसों कहा गया इज 150-160,000 रुपीज, व्हिच इज फिनोमिनल टू हेयर फ्रॉम मी, एंड द नोवा मोबिलिटी बाइक इज अबाउट 220. सो उन्होंने कहा है कि 1.5 साल में हम रिक्यूपरेट करेंगे फ्यूल कॉस्ट. और कोई रैंडम अंदाजा है कि हर महीने 70,000 मोटरसाइकिल ऐड हो रहा है इनटू योर सिस्टम. तो दैट्स अ वेरी बिग नंबर. एंड ये 70,000 सिर्फ मैं आपको पंजाब का नंबर बता रहा हूँ, मुझे सिंध और इस्लामाबाद और केपी का नंबर डॉक्यूमेंटेड नहीं है इतनी अच्छी तरह. So it's probably a few million bikes that you're adding every single year, and you have no tabulation of where that's going. And I think the ये जो आपने बात की है, जो आपकी inroads हैं into China, into these EV spaces, अगर आप हम एक्चुअली कोलैबोरेट इस बात पे करते हैं कि हम अपने पार्टनर्स को आपके साथ लिंक करें कि उनको जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए वो हम इनेबल करें, क्योंकि यहाँ पे इतनी एक्सपर्टीज है कि रिम बन जाता है, सीट बन जाती है, सब कुछ बन जाता है, हेडलाइट बन जाती है, लेकिन यहाँ पे बैटरी और इंजन की एक्सपर्टीज आ ही नहीं सकती, बिकॉज वो एट स्केल डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान में है ही नहीं. मतलब टोयोटा को हम बुरा भला कहते हैं कि यार अभी तक तुम लोग गाड़ी असेंबल कर रहे हो, लेकिन फैक्ट तो ये है कि जब उन्होंने सिर्फ लाख गाड़ी बेचनी है साल की, तो कभी भी इंजन इकोनॉमीज ऑफ स्केल में नहीं फिट होगा, तो कभी पाकिस्तान में नहीं आना था. तो इलेक्ट्रिक बैटरी भी जब आनी है वो बाहर से ही आनी है, और इस तरह की इनरोड्स बहुत ज्यादा जरूरी है. और एक्चुअली ये हमें सोचना आसान होता है कि यार कोई बड़ा बिजनेस ग्रुप होगा तो चाइना को रीच आउट करेगा, लेकिन जैसे आपने कहा हमारी कोई B2B एंगेजमेंट ही नहीं है. जब B2B एंगेजमेंट ही नहीं होगी तो मैं जितना बड़ा मर्जी बड़ा बिजनेस ओनर हूँ, मुझे पता ही नहीं मैंने किसको कॉल करनी है, मेरे पास कोई जानने वाला ही नहीं है. I 101% agree. We are willing and ready to do this with Sasgar and other impact partners and on technology transfer. Amazing. I think that we will definitely reach out to them with this, because I'm sure they'll fully appreciate this help, because they've really been struggling because हमारा government कोई pathway नहीं बनाता. Another discussion on this. Let's set up another discussion on this. Will do. Done. Acha, so kind of moving on to the next bit and kind of the last bit for this conversation, I want to kind of ask you from a personal lens. आपने ऑब्वियसली बहुत पॉजिटिव बातें की, मेरा तो खुद सुबह बेहतर हो गया आपकी अच्छी बातें सुन के, क्योंकि मैं तो रात से बड़ा डिप्रेस था एक दो इवेंट्स पे जाके, जहाँ पे मैंने नंबर सुने कुछ चीजों के. तो मुझे बताएं कि ये जो पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट और जो चाइनीज पार्टनरशिप, एंड इट सीम्स कि हमारी डिप्लोमेटिक साइड पे भी पाकिस्तान ने लीन अख्तियारकारी लिया है टुवर्ड्स चाइना अगेन. तो हाउ डू यू सी अस मूविंग फॉरवर्ड एज अ कंट्री एंड एज एन इकोनॉमी विद द चाइनीज? Thinking the biggest opportunity, Mikhail, that we have right now is that China में cost of production बढ़ गया, and Chinese government ने थोड़ी सी stringent economic measures किए हुए for holding money. They are not letting private money to go outside of China because there's as you know, the slowdown all over the world. Yeah. So and उनका एक certain 8% था, अभी कम हो गया वो, but so they are encouraging and using measures to keep the money inside China. So a lot of Chinese investors are under the pretext of investing abroad, relocating their industry outside China for their own reasons. ठीक है जी, उसमें cost of production भी है और ये भी है. उसमें वो काफी जगह जा रहे हैं, कंबोडिया जा रहे हैं, इथियोपिया जा रहे हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान भी जा सकते हैं. मैं समझता हूँ कि हमारी जो वे फॉरवर्ड है इकोनॉमी की, हम बहुत लंबे चौड़े प्लान बना देते हैं, बहुत लंबे चौड़े. It's like, there's a lot of big words and there's a lot of glamour, पर अंदर खाली होता है. अगर हम एक टारगेटेड बना लेना जी कि आपने $50 बिलियन लगाना से इंडस्ट्री के, वो तैयार है आने के लिए. They want a stable एरिया जहाँ लैंड हो, पोर्ट हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, बिजली गैस हो, एक्सेस टू दैट एरिया हो, जोन बनाए इंडस्ट्रियल जोन. हमने नामा इकबाल इंडस्ट्रियल पार्क में बनाया, फैसलाबाद में टू पे. वो हमें प्लॉट्स का बड़ा शौक है, हर चीज की प्लॉटिंग करके हम बबल बना देते हैं, उसकी कमर्शियल रियल एस्टेट बना देते हैं हर चीज को. तो आप उन्हें इंडस्ट्री को यहाँ लाने दें, उनके साथ हम जॉइंट वेंचर्स करें. मैं समझता हूँ हमारी इकोनॉमी का फ्यूचर वो है. आप डोल आउट से बाहर निकलें, IMF से जहां तक काम कर सकते हैं करें, जहां तक हमें उनकी बहुत जरूरत है. देयर आर ऑक्सीजन राइट नाउ, so we can't really say this is what we want because there's no other option. But for the next 5 years and beyond that, after IMF, thinking beyond IMF, we need to make a strategy, because I would rather have, अगर मेरे सामने
खाना पक रहा है, चूल्हा है सामने, उस पे खाना, I would rather eat that if I'm starving rather than go to a restaurant which is 20 kilometers away and right there. So Yeah. ये जो relocation of industry, China, you have CPEC already, you have the platform already, you are predisposed to it already, you are bordering with them already. So what's stopping you? Yeah. That is my realistic sort of वो हम पिछले 20 साल से 30 साल से मेरे गिर गए बाल आगे से अब कि वो हम कह रहे हैं FBR के टैक्स नेट बढ़ेगा, फिर ये होगा, और वो पता नहीं एक्सपर्ट्स ने जो है वो और पैसे भेजे। आपके सामने जो मुल्क है जिसमें जो सबसे सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, उनकी इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है आउटसाइड। अब वो सर्विस सेक्टर में चले गए, सेकेंडरी सेक्टर्स, जो हम तो हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ उन्हें लाएं हम, और यहाँ से वो फिर एक्सपोर्ट करें जहां भी उन्होंने करना है, जहां से चाइना से जहां वो एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से करें, यहाँ से ग्वादर भी एक्सेस है, मिडिल ईस्ट का, यूरोप का, हर चीज का। Selling, this has been great. Honestly, I have such positive vibes for my day. शायद मेरा weekend भी अच्छा गुजरा आपकी बातें सुनने के बाद. And I hope more people listen to and can get on this bandwagon, inshallah. But thank you so much, Mustafa, for your time. It was an absolute pleasure, and we hope to connect again soon. And I'm sure we'll find lots of our impact partners who will ask for your assistance and guidance. So, inshallah, we'll all stay in touch and hope for growth for Pakistan. Thank you very much. God bless. Thank you. Thank you.